अजीज तलबा, डॉक्टर मोहम्मद तजम्मल चुगताई लेक्चर नंबर 5 लेकर हाजिर है। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सोर्सेस और उनका सीरीज और मुतवाज़ी सर्किट्स में इस्तेमाल और इन सर्किट्स में गैर मालूम मिक़दारों का मालूम करना सीखेंगे। किसी भी सर्किट में सोर्स की हैसियत बुनियादी होती है। आम जिंदगी में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी सर्किट को पावर मुहैया करने के लिए जो बैटरी वगैरह इस्तेमाल की जाती है उसको हम सोर्स से ताबीर कर सकते हैं, या फिर आम जिंदगी में जनरेटर की मिसाल जो हम आम तौर पर घरेलू इस्तेमाल में लाते हैं उसको भी सोर्स से ताबीर किया जा सकता है। सोर्सेस दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 इंडिपेंडेंट और आइडियल वोल्टेज सोर्स, नंबर 2 इंडिपेंडेंट और आइडियल करंट सोर्स। इन सोर्सेस की मजीद दो इकसाम हैं, जिनमें करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या फिर करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स आते हैं। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को इस तरह से समझ लेना चाहिए कि इस सोर्स के अक्रॉस जैसा भी लोड लगाया जाए इसके वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि लोड में से करंट वेरी होता रहता है। आइए एक सादा से ग्राफ से इसकी मिसाल समझते हैं। ग्राफ में दिखाया गया है कि अलोंग एक्स एक्सिस एक कोई एक्स क्वांटिटी ड्रॉ की गई है, जबकि along y-axis another quantity y has been drawn. Now you can see whatever the value of x is, the value of y remains constant. Therefore, we can resemble this graphical example with the independent voltage source. Now we see an actual graph where the current has been drawn along the x-axis, whereas voltage has been drawn along the y-axis. Now, voltage has been shown in the form of a straight line, which again shows that whatever is the value of current drawn from the source, the value of voltage supplied by the source remains constant. In this case, the independent voltage source has been explained. This graph can be defined as current is independent of V, direct voltage. The voltage which is independent of time and its magnitude and direction do not change with time is called direct voltage. अजीज तलबा, अब कुछ बात डायरेक्ट क्वांटिटीज के बारे में। डायरेक्ट क्वांटिटीज का मतलब ये है कि वो बराह रास्त मिकदारें होती हैं, यानी कि टाइम के गुजरने के साथ साथ इनकी मिकदार या हालत पे कुछ असर नहीं पड़ता। जैसे हम डायरेक्ट वोल्टेज को लें तो टाइम के साथ साथ वोल्टेज का लेवल एक ही रहेगा, जबकि एसी में या अल्टरनेटिंग करंट में इनकी मिकदार चेंज होती रहती है। इसी तरह से डीसी करंट की मिकदार भी टाइम के साथ साथ एक ही तरह की रहती है। डायरेक्ट क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम आर कॉल्ड डायरेक्ट क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज और करंट। Alternating quantities, the quantities whose magnitude and direction is changing with respect to time are called alternating quantities. For example, once again, voltage or current. घरेलू इस्तेमाल होने वाले तमाम सर्किट्स में अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसलिए इसको एसी से ताबीर किया जाता है। आइए अब आइडियल करंट सोर्स के बारे में देखते हैं।
ideal current source. The source which gives constant current independent of the terminal voltage is called independent current source. जिस तरह से हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को डिस्कस किया, इसी तरह से इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का मामला भी वही है, यानी कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, जबकि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में करंट कांस्टेंट रहेगी. आइए अब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फॉर द करंट सोर्सेज देखते हैं. ग्राफ में दिखाया गया है कि वोल्टेज को अलोंग द एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है, जबकि करंट को अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ किया गया है. नाउ यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ चेंजिंग वोल्टेजेस. देयरफॉर this graph is depicting the status of ideal current source. अजीज तलबा, आइए अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की फर्दर कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं. वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैन बी डिफाइंड एज द सोर्स whose magnitude is controlled by voltage is called voltage controlled voltage source. Another definition for current controlled voltage source is, if output voltage is controlled by current, then it is called current controlled voltage source. Voltage controlled voltage source की मिसाल आइए अब हम ग्राफ पर देखते हैं. ग्राफ में दिखाया गया है कि along x axis current I2 has been drawn, whereas along y axis voltage V2 has been drawn. Now we can see that there are two voltage levels for V2 which has been drawn into this graph. V2 is equal to alpha V1, whereas we have chosen the value of alpha as 2 and the value of V1 as 1. Therefore, the value of V2 is equal to 2. Now on the upper line, we can also see that V2 is equal to alpha V1, whereas we have chosen the value of V1 as 2 volts and the value of alpha remains constant. Therefore, the value of V2 is equal to 4. Now from here we can see that the value of V2 is independent of the current I2, whereas it only depends upon the voltage V1. Therefore, this graph presents the example of voltage controlled voltage source. Current controlled voltage source की मिसाल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टर लगा हुआ हो, तो इस सर्किट में से बहने वाला करंट वो वोल्टेज Y1 जो कि सोर्स की वोल्टेज होगी उस पे डिपेंड करेगा, जबकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल नॉट बी अफेक्टेड. आइए अब इसी एग्जाम्पल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं. ग्राफ में दिखाया गया है कि अलोंग एक्स एक्सिस करंट I2 को ड्रॉ किया गया है, जबकि अलोंग y एक्सिस वोल्टेज V2 को ड्रॉ किया गया है. जिस तरह पिछली एग्जाम्पल में दिखाया गया था, बिल्कुल उसी तरह इस एग्जाम्पल में भी दो वोल्टेज लेवल्स दिखाए गए हैं. फर्स्ट वोल्टेज लेवल, which is the lower one, has been shown as V2 is equal to small r I1, where r is some constant and I1 is the current flowing through the circuit. Now, if we choose a value of 2 for r and a value of 1 ampere whatever for I1, then we end up with V2 is equal to 2 volts. For the upper line which is drawn into the graph, we can also see that
V2 is equal to R I1. Now we keep the value of R constant and we assume that the value of I1 is equal to 2. Therefore, the value of V2 will become as 4 volts. Now from the graph we can see that the value of V2 is independent of the current I2, rather it is only depending upon the current I1 through the circuit. Dear students, now we take an example of voltage controlled current source. In these sources, the magnitude of the current is controlled by the input voltage, so that we can have the formal definition as: if magnitude of current is controlled by input voltage, then it is called voltage controlled current source. अब इसी सोर्स को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं. ग्राफ में दिखाया गया है कि अलोंग एक्स एक्सिस V2 को ड्रॉ किया गया है, जबकि अलोंग वाई एक्सिस I2 को ड्रॉ किया गया है. नाउ द वैल्यू ऑफ I2 is given by G times V1, or we can say that I2 is proportional to V1, or I2 is equal to V over R, or I2 is equal to G times V, where G is equal to 1 over R, and as you can remember from the last lectures that 1 over R is called the conductance, and this is normally represented by G. So now we come back to the graph. We can see that the lower line of the graph shows that I2 is equal to GV1. If we take the value of G as 2 and the value of V1 as 1, then we end up with I2 is equal to 2. On the upper line, we can also see that I2 is equal to GV1. Now we keep the value of G as same in the lower case, whereas we change the value of V1 to 2 volts. Therefore, the current I2 will be equal to 4 amperes. From here, we can clearly see that the value of I2 is independent of V2, rather it depends upon V1. Therefore, this graph presents the explanation of voltage controlled voltage source. इससे अगला सोर्स टाइप करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, जिसमें इनपुट करंट की मैग्नीट्यूड को करंट से ही कंट्रोल किया जाता है. आइए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं. If magnitude of current is controlled by current, then it is called current controlled current source. Dear students, आइए अब करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक मर्तबा फिर उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस केसेस में देखा है देखते हैं. Graph shows the voltage V2 has been drawn along x-axis, whereas the current I2 has been drawn along y-axis. Now again, two levels of current has been shown. The lower level shows I2 is equal to beta I1. This shows that I2 is proportional to I1, where beta has been used as a constant of proportionality. Now if we keep the value of beta as 2, and for the lower line case we take the value of I1 as 1, then we end up with the value of I2 equals to 2 amperes. Now we go up to the upper line, which is the higher value for I2. Once again we keep the same value for beta, and we take the value of I1 as 2 amperes, so that we end up with the I2 value of 4 amperes. Now this graph has presented the explanation of current controlled current source. अजीज तलबा, इन मुख्तलिफ सोर्सेस की डेफिनेशंस के बाद
Now we will try in some examples that how in a complete circuit we can calculate different values of various quantities in a closed circuit. For this purpose, take a very simple example. This example shows that a 10-volt battery has been attached in parallel to a 3 kilo ohm resistance. The figure shows that a battery of 10 volt is applied in series to a resistive value of 3 kilo ohms. From Ohm's law, the current form of Ohm's law is written as I is equal to V over R. Therefore, from the circuit, we have a value for V is equal to 10 volts, whereas the value of resistance is 3 kilo ohms. Therefore, I is equal to 10 over 3K, which will be equal to 3.33 milliamperes. Hence, we can say that the current flowing through the loop, which is consisting of a resistance R of 3 kilo ohm value, is 3.33 milliamperes. आइए अब एक और मिसाल देखते हैं जिसमें दो रेजिस्टेंसेस को बैटरी के साथ सीरीज में लगाया गया है. This circuit shows that two resistances, one having a value of 2 kilo ohms and the other one having a value of 3 kilo ohm, has been attached in series to the battery of 10 volts value. Now, from the circuit, as we have done in the previous lecture, we can clearly see that in order to calculate the current through the circuit, we start from adding up the two resistances. Therefore, 2K plus 3K is equal to 5K. Hence, our circuit adopts the form as it is having only one resistance of 5 kilo ohm value connected in series with the battery. Now, in order to calculate the current flowing through the resistance, we can again apply Ohm's law. I is equal to V over R. Therefore, I is equal to 10 divided by 5K, and we end up with a 2 milliampere current flowing through the circuit, and the same current will be flowing through 2 kilo ohm resistance and through 3 kilo ohm resistance, as both of these are connected in series with a 10 volt battery. Now we take another example with a slightly complicated resistances attached to the battery. However, all these three resistances, they are attached in series to the battery. आइए देखिए स्लाइड पर. Slide shows that three resistances starting from the top of the circuit. The first resistance is having a value of 25 ohms, second one having 10 ohms, and the last and the bottom resistance is having a value of 5 ohms. The value of the battery voltage is 40 volts. Now, we want to calculate the current flowing through the circuit. Again, remember that because all the resistances, they are connected in series with the battery, therefore, same amount of current will be flowing through all the resistances. Now, we add up all these three resistances, and that will sum up as 40 ohms. Therefore, our circuit adopts the shape as it is having only one resistance of 40 ohms attached in series with the 40 volt battery. Once again, making use of Ohm's law, we can write I is equal to V over R is equal to 40 divided by 40. That will be equal to 1 ampere. Therefore, the current flowing through the circuit will be equal to
1 एम्पियर। अजीज तलबा, यहाँ तक तो हमने करंट फ्लोइंग थ्रू अ क्लोज्ड सर्किट को कैलकुलेट किया, जबकि हमने ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया। मजीद आगे भी हम ओम्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे, जबकि अब किसी भी सर्किट में लगी हुई रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने की कोशिश की जाएगी, जबकि वोल्टेज और करंट की मिकदारें ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई होंगी। आइए एक मिसाल स्लाइड पर देखते हैं। द सर्किट शोज a 10 volt battery attached in series with a resistance of R1, which is unknown resistance. Now, the value of voltage, which is 10 volt, is already given, and it is also given that through this circuit, a current of 5 milliampere is flowing. Therefore, making use of Ohm's law, once again, we can write R is equal to V over I. Inserting the suitable values for the voltage and the current, we can write R1 is equal to 10 volt divided by 5 milliamperes, which is equal to 2 kilo ohms. Therefore, the resistance inserted into the circuit carries the value of 2 kilo ohms. इससे अगली मिसाल में हम देखेंगे कि अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू और करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज गिवन, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आइए स्लाइड पर देखते हैं। स्लाइड शोज अ वोल्टेज सोर्स विच इज अ बैटरी and having a value of V volts is attached in series to a 10 kilo ohm resistance, whereas it is given that a current of 3 milliamperes is flowing through the circuit. Again, by Ohm's law, we can write V is equal to IR, or we can write V is equal to 10 kilo ohms into 3 milliamperes. Resolving that, we end up with 30 volts. Therefore, the value of the voltage source which has been attached to the resistance of 10 kilo ohms is equal to 30 volts. Let's take another example where two resistances has been attached with the voltage source having a value of V volts. Now, we have to make use of the previous lecture to work out the total resistance which is being seen by the voltage source. Therefore, we add up the two values, which is 5 kilo ohms and 10 kilo ohms. Hence, we end up with an effective value which is seen by the voltage source as equal to 15 kilo ohms. Now, if the current flowing through this circuit is given as 2 milliamperes, then again, making use of Ohm's law, we can write V is equal to IR. That will be equal to 2 milliamperes into 15 kilo ohms, which is equal to 30 volts. That means that the voltage source which is attached to two resistances is bearing a value of 30 volts. अजीज तलबा, आप भी देख रहे होंगे कि वक्त के साथ साथ हम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में एंटर होते जा रहे हैं। इसको मैं रोक नहीं सकता, लिहाजा अगली मिसाल में हम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड या पेचीदा सर्किट को देखेंगे कि उसमें से करंट की मिकदार किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। आइए स्लाइड पर देखते हैं। स्लाइड शोज quite a complicated circuit which is having 7 resistances haphazardly attached with each other. To start with solving this circuit, we have to make use of the technique which we have learned in the previous lectures.
So I would start from the two resistances which are at the bottom of the circuit. They are bearing the values of 3 kilo ohms and 6 kilo ohms. Now clearly we can see that these two resistances, they are attached in parallel to each other. Therefore, making use of the parallel resistance formula, we can calculate the equivalent value of the resistor, which will be equal to 3 kilo ohms parallel to 6 kilo ohms. Hence we can write 3K parallel to 6K is equal to 3 into 6 divided by 3 plus 6 equals 18 by 9, which is equal to 2 kilo ohms. Therefore, we replace these two resistances having value 3 kilo ohms and 6 kilo ohms with a single resistance of 2 kilo ohms. Now this 2 kilo ohm resistance is attached to the original 2 kilo ohm value. So we can again, because they both are in series to each other now we can add up. Therefore, we can replace the two 2 kilo ohm resistances with the single 4 kilo ohm resistance so that our circuit becomes a bit more simple. Now, from extreme right hand side of the circuit, we can see that the 3 kilo ohm resistance, which is at the top of the circuit, and the 1 kilo ohm value of the resistance, which is on to the right hand side, they are attached already into series. Therefore, the equivalent value for these two resistances will be obtained by just adding them up. Therefore, we can replace these two resistances with a single equivalent resistance having a value of 4 kilo ohms so that our circuit is as shown in this slide. Now, we can again see that from the right hand side of the circuit that the 4 kilo ohm value which we have just calculated has become parallel to the earlier calculated 4 kilo ohm value, and they both are connected in parallel to each other. Therefore, we can once again calculate the equivalent value for these two 4 kilo ohm resistances which are connected in parallel to each other, so that we can write 4 kilo parallel to 4 kilo is equal to 16 divided by 8. That will be equal to 2 kilo ohms. Hence, our circuit has become a bit more simpler. जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्किट इंतहाई सादा फॉर्म में आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाकी मानदा तीनों की तीनों रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ सीरीज में आ गई हैं, और जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में आ जाएं तो उनका मजमुआ लेना ही बाकी रह जाता है. लिहाजा हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को एड अप करते हैं. आइए देखिए. सो बाय एडिंग these three resistance values, which are 6 kilo ohms, 2 kilo ohms and 4 kilo ohms, we end up with a sum of 12 kilo ohms. Therefore, the simplest form of the circuit is as shown in this slide. Hence, we can calculate the current through this circuit as the value of the voltage source is given as 12 volts. Therefore, once again by Ohm's law, 12 divided by 12 kilo ohms, that will be equal to 1 milliampere. That means whatever situation of the complication of the circuit is, the total current which is flowing through the whole circuit is equal to 1 milliampere. Or in other words, we can say that the battery which is having a potential difference of 12 volts is only
bearing a current of 1 milliampere to flow through whole of the circuit. अजीज तलबा, इसी तरह से मुख्तलिफ सर्किट्स को ड्रॉ करने के बाद जैसा भी आप चाहें उसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए और उसमें से पैरेलल और सीरीज के कॉम्बिनेशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं और रिजॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यूज को अस्यूम कर लीजिए और उनमें से किसी एक वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है घर पे प्रैक्टिस करने से आपको मजीद लर्निंग टैक्टिक्स का पता चलेगा। आइए एक और मिसाल स्लाइड पर देखते हैं। दिस फिगर apparently looks like a very complicated resistance network, whereas all the resistances, they have been supplied by a voltage source of 20 volts. Now to start with, from where to start for the solving of the resistances, we have to inspect visually that what is the suitable point which suits us so that the amicable solution for this network can be produced. In my opinion, we can see that a resistance of 3 kilo ohm is in parallel to the resistance value of 6 kilo ohms. So, we calculate the resistance for these two parallel resistances first. Hence, we can write 3 kilo parallel to 6 kilo ohms is equal to 3 into 6 divided by 3 plus 6, which will be equal to 18 divided by 9. Hence, we end up with an equivalent resistance of 2 kilo ohm value. Therefore, we replace these two resistances with a single value of resistance, which will be having 2 kilo ohm value. Now, this 2 kilo ohm equivalent resistance value is attached in series with a 4 kilo ohm value. Easy busy. Now we can add them up to get 4 plus 2 is equal to 6 kilo ohms and replace these two resistances with their equivalent value so that our circuit adopts the simpler form as shown in this slide. Now clearly we can see that a 12 kilo ohm value is in parallel to the equivalent 6 kilo ohm value. Therefore, the equivalent for these two resistances will be calculated as 6K parallel to 12K, that will be equal to 6 into 12 divided by 6 plus 12. That will end up as 4 kilo ohm value. Therefore, we can see that we have extremely simple network where only 3 resistances are connected in series to each other. Now, the simplest solution once again that we add them all up. Therefore, to get the summed value of 10 kilo ohms. Hence, the complicated network which was shown in the first slide will adopt a very simple value such that only one resistance of 10 kilo ohm has been attached in series with a 20 volt battery value. Now we can easily calculate the current flowing through the circuit. Once again, making use of Ohm's law, we can write I is equal to V over R. That will be equal to 20 divided by 10K, that will be equal to 2 milliamperes. So that will mean that whatever is the complication in the network, the battery is only bearing the pressure of 2 milliampere current. अजीज तलबा, अब तक तो हमने मुख्तलिफ वोल्टेज सोर्सेज और उनके नेटवर्क्स में से मुख्तलिफ वैल्यूज को निकालने का अमल सीखा। इसके बाद हम एक नई टाइप ऑफ सर्किट्स जिसको आम जुबान में वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स कहते हैं उसका इस्तेमाल सीखेंगे। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स आमतौर पर
रेजिस्टिव नेटवर्क्स होते हैं। इनमें दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे होते हैं और इनके एनालिसिस में किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को निकाला जाता है। आम फहम जुबान में इसका इस्तेमाल इस तरह से समझा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैटरी की कुछ ऐसी वैल्यूज दरकार हों जो कि आम मार्केट में स्टैंडर्ड बैटरीज में अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उस जगह पे हम अपनी डिजायर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर की फॉर्मल डेफिनेशन को इस तरह से देख सकते हैं। एनी सीरीज सर्किट इज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। द IR drops are proportional parts of the applied voltage. Special formulae can be used for voltage and current divisions as shortcuts in calculations. The voltage division formula gives the series voltage even when the current is not known. The current is having the same value in all resistances because they are connected in series in the circuit. Also, the voltage drops equal to the product of I and R. Therefore, the IR voltages are proportional to the series resistances. A higher resistance has a greater IR voltage than a lower resistance in the same series circuit. Equal resistances have the same amount of IR drop. If R1 is double than R2, then V1 will be double than V2. और इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल हो तो दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो हम वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेंगे वो बिल्कुल बराबर होगा। जबकि अगर इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल ना हो तो अकॉर्डिंगली उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज हो जाएगा। यानी कि लो वैल्यू रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी कम होगी, जबकि ज्यादा वैल्यू वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की ड्रॉप वैल्यू भी ज्यादा होगी। आइए मजीद कुछ पॉइंट्स स्लाइड्स पर देखते हैं। द सीरीज स्ट्रिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए वोल्टेज डिवाइडर। ईच रेजिस्टेंस provides an IR drop V equal to its proportional part of the applied voltage. This can be stated with the help of the formula V is equal to R divided by RT into VT, where RT is the total resistance and VT is the total voltage. Now we want to calculate the voltage drop across the 4K resistance from the network as shown in this slide. Therefore, making use of the voltage divider formula, we can write V is equal to 4 divided by 10 whole into 10. That will be equal to 4 volts. That will mean that the voltage drop of 4 volts can be measured across the resistive value of 4 किलो ohms. अजीज तलबा, अब हमने 4 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट किया है। इसी मिसाल को फर्दर आगे लेते हैं और कोशिश करते हैं कि 6 किलो ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप वैल्यू आती है। आइए देखिए। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6K resistors. Therefore, by the help of formula, V is equal to R divided by RT into VT. That will be equal to 6 divided by 10 whole into 10. That will be equal to
6 volts. Therefore, we can say that a voltage drop of 6 volts will be developed across 6 kilo ohm resistance. अजीज तलबा, आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर में हम वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर, इनकी सादा मिसालें और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।